So we have an education system in which 58% students of class 9, as reported in annual status in education report, which is made by a private research body, but totally recognized by Government of India and included in Government of India's economic survey report. It says that 58% class 9 students of India are not able to do the maths of class 5. Around 30% students of class 9 do not have the linguistic skill of class 5. 72% government schools do not have the adequate bathroom, toilets, etc., drinking water, etc., which forces especially the female students to drop out early. Around 62.5% students, parents do not encourage, or rather they do not have a family environment which could support their home studies. They live in an adverse home environment which is completely anti-educational environment. In such a hostile and anti-education environment, do we expect our students to do some extraordinary works or achieve certain extraordinary educational achievements? That's not feasible and practical. In such an environment where unemployment is an equally daunting, unemployment is an equal big problem. In such an environment, the unemployed youths will create supply, and these children who do not have affordable and accessible education, they will create a demand. So on the one hand, there is supply in the form of unemployed youths and demand in the form of the students who are not in a position to afford or to manage or to access the right educational platforms. This demand and supply create an economy in itself, and this is how the YouTube coaching system has come into existence. There may be many flaws in it, but there is a theory in anthropology and sociology that wherever there is demand, there will be structure. So demands will create structures, supplies will create functions. So when there are structure and function, there will be certain institutions, and YouTube education system is the product of this natural call for demand and supply. The governments in India, even in coming 10 years, cannot fill this huge gap. Even if the quantity aspect is filled, the quality will remain a challenge. More than 60% government educational, especially the school, and the same goes for the college education also. They are not able to provide the quality education, and that is why this YouTube education system has come into existence, and it will self-correct itself. It will not vanish, but it will self-correct. It is going to persist. There may be self-correction
So we should, instead of attacking one or the other parties, we should look at the things in the broader ways, broader manner. It is a part of our social system. No problem is beyond our social system. The problems are the product of our society as a whole. Everyone is equally responsible. But we must appreciate the role of YouTubers in decentralization of education, affordability, accessibility of education. They have certainly decentralized a great privilege that used to be education. Earlier they used to say राजा का बेटा ही राजा बनेगा, but there are certain positive role played by YouTuber education who have made the education available in the rural remotest area. Now children are having access to at least some good quality of content from the comfort of their whatever work they are doing. मैंने देखा है बच्चे खेतों में और सड़क पर YouTube से पढ़ते हुए, और IIT, नीट, UPSC, स्टेट सिविल सर्विसेज, ये बच्चे, अब वो सब बच्चे जो किसी अच्छे स्कूल और कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इन्होंने एक तरह के एजुकेशनल इक्वालिटी अचीव की है. तो ये YouTube को क्रेडिट देना ज़रूरी है. But at the same time, there have been some teachers who boasted more than they contributed. गलत कंटेंट डिलीवर करना, ये भी एक प्रॉब्लम है. So that will also come under criticism, and that's why all of them must be prepared for criticism. तो अगर आपकी कुछ अच्छी चीज़ है तो उसमें कुछ लिमिटेशन भी होगी, कुछ उसके criticism. Those all should be prepared to accept the criticism if they have received accolades, the appreciation and rewards in terms of fame, in terms of money, in terms of wealth. Then they should be equally humble in accepting some kind of criticism. But again, there is a difference between criticism and attack. No one should attack. So there is one very popular teacher around whom the whole controversy, I mean, he should not have plucked this controversy. He himself made a mistake by early harvesting that criticism. He took all the but his intention is also good, that he thinks and he thought that he belongs to a community, and he defended and he tried to defend the community. It's good, no problem. There should be a community sense. If somebody says that there is 1,00,000 करोड़ कितना 1,00,000 करोड़ 80,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम है. 3,00,000 करोड़ की मीडिया इंडस्ट्री है, ये भी तो है. मीडिया में कितनी गलत चीज़ें हैं, गलत रिपोर्टिंग, सेंसेशनलिज्म और क्या क्या नहीं है मीडिया के अंदर. तो वैसे ही टीचिंग भी एक इंडस्ट्री है, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. हमारे पास सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री नहीं है, तो चलो कम से कम कोचिंग इंडस्ट्री है. कम से कम इसी कोचिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही तो लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे, जान रहे कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बनानी चाहिए. हिस्ट्री के बारे में लोगों ने जाना, अपने कल्चर के बारे में जाना. अगर यूट्यूब ना होता तो भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति और भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना जो नॉलेज डिसेंट्रलाइज हुआ है, तो ये लोग नहीं जान पाते. तो मे बी ये एक ट्रांजिशन फेज़ है जो हमें एक नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार कर रही है. And we are getting prepared for next stage, and that may take us to the level where we deserve
which we deserve to reach China-like stage. तो ये एक ट्रांजिशन फेज है और इतना अवेयरनेस, एक रिनेसेंस, धार्मिक और स्पिरिचुअल रिनेसेंस along with knowledge, along with industrialization, agriculture, in every field they have played a crucial role. So that media person who attacked the teachers, that was also unwanted, unwarranted, and the so-called YouTubers as a teacher, they also trying to gang up, to build a gang up. So 1 lakh crore industry is not bad, but ganging up and trying to create an alliance and counter alliance, that's very bad. The politics of allianceism and counter alliance, we are already so much divided. We should not allow ourselves to be further more polarized and divided. We are already heavily divided, polarized on the basis of caste, language, region, geography, what to talk of religion. So, and one more thing, ki those who come in the field of market, which works on the principle of demand and supply, they should not claim of something called what they call specialization. स्पेशलाइजेशन करने वालों का तो आप देखिए यूनिवर्सिटी में बहुत स्पेशलाइज लोग हैं, बट अगर इतने ही स्पेशलाइज हैं तो वो अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे होते. तो एक मार्केट सिस्टम में आप इसलिए नहीं चलते कि आपके पास कोई स्पेशलाइज डिग्री और क्वालिफिकेशन. मार्केट सिस्टम में आप इसलिए चलते क्योंकि आप सर्टेन डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं जो अदर्स नहीं कर पा रहे. दैट इज़ अ डिफरेंट लॉ ऑफ ड्राइविंग द मार्केट. तो इसलिए जो बेटर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, बता सकता है, उसके जो ऑडियंस है वही डिसाइड करेगी कि वो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है या नहीं है. अगर वो मार्केट में चल रहा है तो इसका मतलब कि वो डिमांड को फुलफिल कर रहा है, सप्लाई दे पा रहा है. मार्केट ऑलवेज हैज़ अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म. वो जहाँ भी गलत होगा, आपने देखा है प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, जहाँ भी कुछ गड़बड़ी होती है मार्केट सेल्फ करेक्शन में जाता है. बट लेट इट बी सेल्फ करेक्टेड बाय द मार्केट. किसी को किसी के ऊपर अटैक करने का, वर्बल या फिजिकल अटैक करने का, ये राइट और पावर तो नहीं हो सकता. तो इसलिए मिस्टर खान, who has been a very popular teacher undoubtedly, he has played some positive role and that must be appreciated. लेकिन अगर आप कुछ गलत चीज़ प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो व्यूज़ हो चाहे फैक्ट हो, तो आपको भी उसकी क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए. बट फिजिकल अटैक और द वर्बल planned and ganged organized attack, that's unhealthy, unwarranted. So we should understand the basic problem in our education system. Parents जब तक अवेयर और फुली कॉन्शियस नहीं होंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो तो वीक होगा. और इंडिया इज़ स्टिल वेटिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल मॉड्यूल. और इतना वास्ट देश है, इसलिए इसमें जो लोग कहते हैं कि एक जैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो भी नहीं चल पाएगा. एक जैसा एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल, उसमें भी डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज़ आएंगी क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी इक्वल नहीं हो सकती. So even that one common education system is not going to solve all the problem. The problem is that we must learn from China. Government job centric education से हमें थोड़ा enterprise centric education system develop करना ज़रूरी है. हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम
गवर्नमेंट जॉब को like treats like the ultimate moksha of life. So we need to shift our education towards entrepreneurship, innovation, invention. तो अभी तो यूट्यूबर्स के अंदर ये कोई चीज़ नहीं, ऑल यूट्यूबर्स आर टीचिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ऐसे यूट्यूबर टीचर्स की ज़रूरत है जो हमारे बच्चों को ग्लोबल लीडर बना सके. आई थिंक दैट विल बी द सेकेंड स्टेज, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ evolution of education in India through online platforms.